Friends, this is Vikram Prasad Baliawala in USA. In this video, I am presenting my wife's whole chicken, spicy Indian spice chicken making method. As you know, in India, this is very, very popular, which is eaten after cooking with rice or with wheat bread or pita bread. In India, there are many spices, but usually there are 10 to 12 spices that are very popular. And again, they vary from state to state, region to region. In our area of UP, where we come from, the whole chicken is prepared from different spices, which include coriander powder, black pepper powder, cumin seed powder, turmeric powder, red hot pepper, entire cloves, entire cardamom and crushed, bay leaves, and sometimes a few more spices like cinnamon and some other spices that will be shown in this video. So the procedure involved that you thaw the chicken, which is almost always frozen in the USA, and then after thawing, you add spices including rosemary and cinnamon and others that I have told you. And then you bake in the oven at around 330 to 350 degree Fahrenheit for about 3 to 4 hours. And in this entire procedure is shown how she makes the chicken, which is very, very delicious and flavor-giving, very good in taste. So here she starts with the whole chicken, which she will thaw, and after that she will rub the salt all around, and then she will add the spice, which will have been fried in hot oil, and then she will add onion, cut garlic, and some other stuff as shown in this video. And once the spice is done, she will rub it all around the chicken. But the most important step is that the chopped onion, garlic, ginger is fried thoroughly, and then powdered spice is added, and then it is fried. So once it is fried very well and some oil starts coming out, then she rubs that part, the spice, with the chicken, all over the chicken, inside, outside. And then, as I said, she cooks it in oven at around 330 degree for 3 hours. So this is a very interesting protocol for making a delicious whole Indian spice chicken, in which the chicken is not fried, but then the way it is cooked, it becomes so well done and tasty that it is very delicious to eat. जो मेरे हिंदी स्पीकिंग भाई हैं और बहनें हैं, वो जानती हैं कि हिंदुस्तान में चिकन को बड़े शौक़ से होल चिकन को बनाया जाता है, और जो है जो बिरयानी राइस के साथ या पीता ब्रेड के साथ या पराठा के साथ खाया जाता है। तो ये जो है तरीका बनाने का बहुत ही अच्छा सिस्टम है
और खाने में ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो इंडियन लोग हैं अमेरिका में या और देशों में, वो लोग इसे बराबर बनाते हैं और इसे बड़े शौक़ से खाते हैं। तो यही इस वीडियो में हम ऑन बिहाफ ऑफ माय वाइफ जो है हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए अंत में आप देखिएगा कि ये चिकन कुक करके कितना अच्छा दिखता है, और फिर उसके बाद में खाने में आपको बहुत टेस्टी रहता है। तो आप इस इंटायर वीडियो को देखिए, और जैसा आपको पसंद आए इस पर कमेंट भेजें। तो मैं यहीं रोक रहा हूँ ताकि आगे और कुछ बात कर सके। तो ये है, याद रखिएगा कि ये जो वीडियो है इंडियन स्पाइस्ड होल चिकन बनाने के बारे में है। और इंडियन स्पाइस तो इतने पॉपुलर हैं, तो हम बोले आपको कि केवल इसमें 10 स्पाइसेस हम दिखाए हैं, लेकिन इंडिया में जो लोग हैं डिपेंडिंग, अगर आप केरला की तरफ जाएं तो कुछ और स्पाइसेस डालते हैं। तो ये थ्रू आउट इंडिया ऑल्दो थोड़ा डिफरेंट है तरीका बनाने का, लेकिन बेसिकली यही सिस्टम है। और जो है राइस के साथ इसे बड़े शौक़ से खाया जाता है। और राइस भी जिसको कहते हैं हम लोग भात, जो है बिरयानी राइस भी होता है, वो अलग मीट डाल के बनाया जाता है। और देखिए इसमें आलू नहीं डाला गया है, लेकिन बहुत जगह इसमें आलू डाला जाता है। तो इसको आप जो है ये भी देखेंगे कहीं कहीं लोग बड़े चंक में अनियन भी काट के डालते हैं आलू के अलावा। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या इसमें डालें। और जो आलू भी डालने के बाद में इसमें बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप इसे शौक़ से देखें और इसको ट्राई करें, इंजॉय करें, और अगर आपको अच्छा लगे तो अपना कमेंट भेजें। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। ये वीडियो मेरे वाइफ का देखिए अभी इस ओवन में 3 घंटे के बाद कुक हुआ है, कितना अच्छा दिख रहा है। और देखिए अभी भी यहाँ भी है 3 घंटा कुक करने के बाद में 330 डिग्री, बहुत ही टेस्टी डिलीशियस है। और तो थैंक्स फॉर वाचिंग अगेन, धन्यवाद, बाय बाय। Note that spicy food may give acidity in some people.